The copy number refers to the number of molecules of an individual plasmid that are normally found in a single bacterium cells. Factors that control copy number are not that well understood. We don't know that why some bacteria has more than one copy, sometimes 10 copies, sometimes 30 copies. But we know that certain plasmids, we can categorize them as low copy numbers. Low copy number refers to around 1 to 25 plasmids per cell. These are also known as stringent plasmids. High copy numbers refers to 100 or greater copies per cell. When you actually induce most of the high copy number strains, actually they can go up to 1000 or 4000 plasmids per cell. They are also known as relaxed plasmids. One thing you need to keep in mind here is that using high copy number plasmids and is one of the major techniques to amplify your gene of interest. Previously, so if you are not using PCR, actually this is the alternative to do, that find certain gene and basically put them in a high number cloning vector and amplify it this way. So for cloning, plasmid contains a number of structural elements. The first and foremost is origin of replication. It needs to have multiple cloning sites. It needs to have a selectable marker. It needs to have a purification tag and a promoter. Purification tag is more reserved for expression vectors only, but and also the promoter if you are not going to produce your protein inside. But the first one is common to all the vectors which exist. So origin of replication ensures that bacteria is able to multiply within the cell independently of the main bacterial chromosome. क्यों? क्योंकि origin of replication है जहां से ultimately replication ने start होना है. अगर origin of replication हम नहीं डालेंगे तो basically it will be just an extra chromosomal DNA जो वहां पर पड़ा रहेगा और जब cell divide होगा तो it won't be able to divide itself. There are two ways bacteria replicate themselves. One is either they are a non-integrative plasmid, वो पूरे इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो अपने बड़े आराम से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के पास भी नहीं आते और खुद ब खुद ही रेप्लिकेट होते रहते हैं. एंड देयर आर सम्स विच whom we call एपिसोम्स. व्हाट एपिसोम्स डू इट कि वो बेसिकली क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं और जब क्रोमोसोम डिवाइड कर रहा होता है उसके साथ डिवाइड हो जाते हैं. लेकिन जितने एपिसोम्स हैं वो भी अपने लाइफ साइकिल में कभी ना कभी एग्जिस्ट करते हैं एज अ नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड. नाउ multiple cloning site. This is a very modern vector, PET24. It is from the PET series by Invitrogen. इसमें आप ये देखेंगे कि when I am talking about restriction enzymes, आपके पास बेतहाशा चॉइस है. आपके पास ये जो सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं, these are various restriction enzymes which we have discussed in detail few topics back. Now look at its structural elements. ये इसका origin of replication है. Let me highlight it. ये आप इसका origin of replication देख रहे हैं और ये आप इसके अंदर multiple cloning site देख रहे हैं. And it has a kanamycin gene here. This is the kanamycin gene. और इसके अंदर lacopron भी है. We will discuss lacopron as a separate topic later. But you can see that modern vector has a lot in it. और इसका साइज क्या है? Just slightly larger than 5 kilobases. Now, one thing I want you to note about multiple cloning site is that it has a T7 promoter. If you look at this particular image, it has a T7 promoter. So we said that a promoter is necessary for an expression vector. और जो PET24A है, this is an expression vector. Now, one thing, हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो usually they are usually hexa cutters.
Multiple cloning site. One thing important here is to observe that we discussed earlier that restriction enzymes are usually hexacutters. But when we look at the multiple cloning site here, let me draw that for you. So this is the multiple cloning site. And in this multiple cloning site, you can see that there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 restriction sites are present, but they are staggered. They are staggered to minimize the space. And that's the ingenuity and the way these companies design these multiple cloning site. कि अभी एक साइट खत्म नहीं होती वो दूसरी की स्टार्ट कर लेती हैं. And it gives you a lot of flexibility in less base pairs. Similarly, you can see in this particular image that you have a T7 promoter. Now PET24 is an expression vector, therefore it has a promoter. We'll discuss T7 promoter in the coming topics as well. Now, let's see. We have discussed RP4 before as well. So basically you need to have some sort of antibiotic resistance so that you can select, and RP4 has 3 resistances against 3 antibiotics. Now, if you look at this particular diagram, this is diagram of some E. coli cells which contain RP4, and there are certain plasmids which do not contain RP4. So if we grow them in normal growth medium without any antibiotic, all the cells would grow which would have antibiotic resistance and which would not have antibiotic resistance. लेकिन जब हम ऐसा growth medium देंगे where we would have 50 microgram per ml of tetracycline, then only cells containing RP4 would be able to grow and rest of the cell would die. In this way we will have a pure population of the bacteria जिसके अंदर आपका gene, जिसके अंदर आपका vector transform हुआ हुआ है. Now imagine कि आपका जो वेक्टर है वो सिर्फ किसी बेसिकली किसी ऐसे प्लाज्मिड के ऊपर है जिस प्लाज्मिड में एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है. तो यू वुड बी एबल टू सेलेक्ट द बैक्टीरियम विच आर हार्बरिंग पर्टिकुलर प्लाज्मिड containing your gene. In expression tags we can have a purification tag. Now these plasmids may contain purification tags either at the N terminal or a C terminal. These purification tags helps with the downstream processing of the protein. Downstream processing. Sometimes it appears क्या कितना मुश्किल word आ गया. पता नहीं किस चीज की downstream processing होने लगी है. Basically ये जो हम cloning और ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, these are upstream processing to ultimately find something. जितना रॉ मटेरियल होता है ना इंडस्ट्री में उसको प्रेप करना, उसको तैयार करना रिएक्टर में से गुजारने से पहले, दैट इज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. और एक दफा रिएक्शन का हो जाना इन आवर केस दैट इज बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रोटीन. उसके बाद जितनी प्रोसेसिंग है दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. वी स्टडीड इन डिटेल कि ट्रांसलेशन क्या होती है. व्हाट इज द एडवांटेज टू हैव an N terminal or a C terminal tag? जस्ट सोचें इस बात पे. अगर आपके पास एक N terminal tag होगा तो सबसे पहले वो टैग प्रोड्यूस होगा और उसके बाद आपकी बाकी प्रोटीन आएगी. लेकिन वी नो कि जब ट्रांसलेशन हो रही है तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो पूरी की पूरी ट्रांसलेट नहीं हो पाती. तो जब आप सिलेक्ट करेंगे एक N terminal tag, यानी कि अगर आपने एक N टर्मिनल टैग रखा है तो उसका एक डिसएडवांटेज ये होगा कि आपके पास जो हाफ ट्रंकेटेड प्रोटीन्स हैं आप वो भी आइसोलेट कर लेंगे. लेकिन अगर आप C टर्मिनल पे टैग लगाते हैं तो उसका क्या फायदा होगा. सिमिलरली आपको पूरी की पूरी प्रोटीन ट्रांसलेट हुई सिर्फ आप आइसोलेट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे. So that is something to keep in mind. But why people still use N terminal tag? क्योंकि बाज़ वक़्त C terminal के पास एक्टिव साइट होती है which you don't want to hinder due to the purification tag. Sometimes you are ultimately going to excise the gene, the tag anyways. तो आपको इतनी ज़्यादा hassle नहीं होती. Secondly, sometimes you are using some other purification methods as well, like आप size exclusion chromatography कर रहे हो या कोई और मेथड कर रहे हो.
तो अल्टीमेटली आप कहते हैं कि इट्स नॉट अ बिग हैसल कि हम एन टर्मिनल पे करें या सी टर्मिनल पे करें. These are some examples of most commonly used purification tags. AV tag is a peptide which allow biotinylation by the enzyme BIR-A, and so the protein can be isolated by streptavidin-avidin binding reaction. Colmodulin tag similarly works. It's a peptide bound by the protein colmodulin. Polyglutamate tag है जो एनाइन एक्सचेंज रेजिन के तौर के ऊपर आप जब एनाइन एक्सचेंज से गुजारेंगे तो अल्टीमेटली इट विल बी कैप्चर्ड. क्यों कैप्चर होगा एनाइन रेजिन से? रिमेंबर हम लोगों ने ग्लूटामेट स्टडी किया था बकायदा अपनी अमाइनो एसिड साइड चेन्स में, एंड ग्लूटामेट हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट. इसी तरह फ्लैग टैग है, इसी तरह हिस टैग है. हिस टैग इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टैग विच हैज आइदर यूजली हेक्सा 6 हिस्टिडीन्स हैं जो साथ साथ आती हैं, और बेसिकली एक निकल और कोबाल्ट चिलेटिंग कॉलम पे आप इनको आइसोलेट कर सकते हैं. इसी तरह यू कैन सी द सीक्वेंस ऑफ एन एक्सप्रेस टैग एज वेल. Different companies use these tags and they put it in their commercial vectors so that ultimately you can use them for the purification of your proteins.